If you want to have a good life, then it is important that you have good food on your plate and that you also feel worthy of that good food on your plate. Spend 20 minutes in the kitchen and 2 minutes in the bathroom versus what we've been doing right now. You know, the advertisements are always about 2 minute का खाना बना और फिर 20 मिनट हम लोग बाथरूम में बैठे हुए हैं. मरते दम तक जवान क्यों रहना है? मरते दम तक अगर बुढ़ापा आ गया तो it's a wonderful thing, you know. So we have to see aging as a beautiful process. That is one of the things that we ought to do, so that we understand that good health comes in different shapes and sizes and lines and wrinkles and hair at different stages of life. Unfortunately, organic, inorganic and all of that, ये सब labels ही है और फिर so called organic food सिर्फ अमीरों का ही हो जाता है. जब हम 4 बजे अच्छा कोई होलसम खाना नहीं खाते हैं, जब हम डिनर 7:30-8 बजे से लेट करते हैं, तभी जाके हमको मिडनाइट क्रेविंग्स होती है. फोन एंड एवरीथिंग एल्स शुड बी स्विच्ड ऑफ वाइल वी आर ईटिंग. फ़ोन का कोई जगह ही नहीं है. ओनली टाइम टेस्टेड ट्रेडिशनल कुकिंग इंक्रीजेस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड. Air frying, microwaving, all of these take away from the nutrition value. You know, I think what all of us should be emulating from Kareena Kapoor is that she never says a single critical thing about herself. I really think that, if you want to have a good life, then it is important that you have good food on your plate and that you also feel worthy of that good food on your plate. And we need men who can cook because, we have seen in our country that there is a multifold increase in junk food, and you only eat a lot of junk food and ready to eat food if the woman is constantly tired of bearing the solo burden of having to run a kitchen. That's when she looks for shortcuts. But when there is a man who can contribute equally or who can at least contribute 30 to 40%, then as a family we can have better meals, healthier meals, tastier meals. And like I always say these days, spend 20 minutes in the kitchen and 2 minutes in the bathroom versus what we've been doing right now. You know, the advertisements are always about 2 minute का खाना बना और फिर 20 मिनट हम लोग बाथरूम में बैठे हुए हैं. तो if we do that, if men learn to cook, then I think everyone is healthy. And OG self care यही होता है कि आप खुद अच्छा खाना खाओ और जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बाकी सब लोगों को भी खिलाओ. और जब वो खा रहे हैं तो वो क्या खा रहे हैं, क्या उनको अच्छा लग रहा है, उस पर अगर आपका ध्यान भी रहता है तो आई थिंक तभी लोगों को प्यार मोहब्बत महसूस भी होती है. इफ़ यू आर जस्ट ईटिंग अलॉन्ग विद समवन बट यू नॉट पेड अटेंशन टू व्हाट दे एट और हाउ मच दे एट, देन दे डू get that whole sense of neglect. But unfortunately, Urvi, as I began to start working and when I would do my consultations, right from the time that I was 20, I discovered something really funny. And this funny thing was that if I asked women, what is your favorite food? A lot of them didn't know what is their favorite food. They were like, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे कुछ भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है. तो देन आई वुड गिव देम प्रॉम्प्ट्स लाइक आपको गुलाब जाम अच्छा लगता है, श्रीखंड पूरी अच्छा लग, yeah, like anything, so they had even forgotten what their favorite foods were. And if you asked a man, then even today I will have some men, like I recently started working with a Bengali man, and he said the only reason I have signed up in lakhs to work with someone like you is because I know that you will not stop me from eating Nolan gur, which is basically the mithai that they get right now. कि तुम मिठाई अलाउ करोगी इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ साइन अप किया है, अदरवाइज आई हैव नो रीजन टू गो टू एनी डाइटिशियन, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक. So cooking is important, and I really mean this, that we need to be, forget marriage, even dating men who can make दाल चावल. अगर उनको दाल चावल बनाना नहीं आता है, डेट ही मत करो. को क्या करते हो, लेफ्ट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप. All the girls take notes. Yes, please take notes, because what really girls care about, and I have seen this, are deep conversations. And you can only have deep conversations with good listeners. And good listeners are men who cook in the kitchen. They are not men
who have a six pack. They are not men who earn a six-figure salary. They are men who contribute in the kitchen. You want a good relationship, that's the man that you're hunting for. The most commonsensical thing that we ought to be doing, because even the session before us spoke about attachment and fear and anxiety and stuff like that, is the first most commonsensical thing that we ought to do is that we have to really give up our need to be constantly young. So if we give up on that one need कि मतलब मरते दम तक जवान क्यों रहना है, मरते दम तक अगर बुढ़ापा आ गया तो it's a wonderful thing. So we have to see aging as a beautiful process. That is one of the things that we ought to do, so that we understand that good health comes in different shapes and sizes and lines and wrinkles and hair at different stages of life. I think that is probably the first thing that we ought to do. The second thing that we ought to do is to remember that to enjoy life at every stage, we need to eat good food. And good food क्या होता है? सो नंबर वन, गुड फूड लोकल फूड होता है जिसका नाम आपके रीजनल भाषा में हो या आपके मातृभाषा में हो. खाने का नाम आपके भाषा में होना चाहिए. अगर खाने का नाम सिर्फ अंग्रेज़ी में है तो वो आपके लिए गलत है. कीनवा, एवोकाडो, रुकोला, एस्पैरागस, ब्रोकली, ये वाला आपके लिए गलत है, और आपके भाषा में जिसका नाम है वो आपके लिए सही है क्योंकि वही टाइम टेस्टेड है. The second thing is that food should be seasonal. Food should be seasonal because अगर हम सीज़न के हिसाब से पब्लिक कपड़ा भी पहनता है, so then why aren't we like सीज़न के हिसाब से हम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? तो we have to be eating according to the season. And the third thing that we ought to be doing is that should be eating according to time tested traditional practices. अभी क्या हुआ है that the latest trend in dieting is to take everything local but to make some really exotic thing out of it. कि हल्दी जो है अभी तड़के में नहीं, उसका शॉट मारेंगे. मोरिंगा जो है अभी सांबर में नहीं, उसका सूप बनाएंगे. एलोवेरा जो है वो और कुछ नहीं, अगेन उसका शॉर्ट करेंगे. तो आई ऑलवेज फील वी आर इन द लैंड ऑफ पंजाब. पंजाब नोज के शॉर्ट्स किसके होते हैं, सो डोंट बी लाइक पत्तों को और ये सब को शॉर्ट्स मत बनाओ, रूट्स और लीव्स और व्हाटएवर को. प्रॉपर शॉर्ट्स को शॉर्ट्स रखो और ये सब को रेगुलर खाने में. सो टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ कुकिंग आर इम्पॉर्टेंट. सो लोकल, सीजनल एंड ट्रेडिशनल खाना, दैट्स द सेकेंड पॉइंट विच आई थिंक is important. The third thing is really the basic commonsensical thing of paying attention to the food that you're eating. So no WhatsApp, no TV, no phone, no reading a book, no newspaper, and just you and your food. Thank you, ma'am. And the fourth thing is, feeling, and this I think is important because this is something that we have forgotten. एक ज़माना था लोग खाने के पहले प्रेयर करते थे, अभी लोग खाने के पहले कैलोरीज काउंट करते हैं. मतलब हम लोग का क्या स्टैंडर्ड गिर गया है. इट इज़ नॉट इवन फनी. सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट इज़ ऑन योर प्लेट. डोंट बी गिल्टी अबाउट वॉट यू आर ईटिंग. एवरी वन डिजर्व्स टू ईट गुड फूड. खाली वेट लॉस इंडस्ट्री ने हमको ब्रेन वॉश किया है कि अगर चकाचक दिखना है तो बकवास खाना खाओ. ऐसा नहीं है, अच्छा खाना खा के भी आप अच्छे ही दिखोगे. एंड लास्टली आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फूड, remember that gender neutral kitchens are the need of the hour. We need to be having kitchens जहाँ पर हर कोई आए जाए. We cannot be like because there are some men who I've seen, they will not cross that line also. They're like, what is this, Lakshman Rekha or what? And what we now know is sitting is the new smoking. So I say this to everyone कि if you really want to kill someone ना, उसको बैठ के खिलाओ. Don't let that person get up for anything. पानी का ग्लास, चाय का प्याला, सब कुछ go give it. And जब ये चाय खत्म हो गया तो you only come and pick it up. So that way I think you can really rot while being alive. So the whole point of being alive and being fit is to be mobile. We have legs so that we can use them. We have hands, we have the ability to pay attention. So gender neutral kitchens is something that we should be doing. So these are some of the commonsensical practices that we can all adopt.
So college students living as a PG, being a migrant worker, these are all serious problems. But once you settle down at one place and you want something to, cook without it costing you too much time, then I think again it just becomes a क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छा खाना आपको आप बना सकते हो और 15 से 20 मिनट आपको लगाने चाहिए किचन में तो सबसे आई थिंक अगर सबसे आसान चीज़ तो खिचड़ी ही है मूंग दाल खिचड़ी सो दैट इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस मस्ट लर्न टू मेक एंड इट्स ईजी टू कुक एंड इवन इफ़ यू आर टायर्ड यू डोंट हैव टू स्टैंड बाय द गैस एंड डू एनीथिंग आपने एक बार लगा दी तो वो 20 मिनट में बन जाती है सो खिचड़ी इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड बट फॉर स्टूडेंट्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स हु आर ट्रैवलिंग आई रियली फील दैट व्हेन दे कम फ्रॉम देयर होम टाउन्स तो उनको अपने घरों में से उनकी दादी नानी सब लोग बहुत बताते हैं कि है ये लड्डू लेके जाओ पिन्नी लेके जाओ ये मठरी लेके जाओ लेकिन वो लोग बहुत नाटक करते हैं कि नहीं नहीं आई डोंट वांट टू ट्रैवल विथ ऑल दिस फूड तो वो लोग वो लेके नहीं आते और फिर बाद में पछताते हैं और फिर वो सारी चीज़ें खाते हैं मैगी कुरकुरे मोमोज एंड स्टफ एंड देन देयर लाइक व्हाई एम आई interestingly when you're a young person and you start eating poorly you don't get fat you get thin but your skin begins to go bad your hair begins to go bad and then eventually from a teenager by the time you come to a 30 you're fat also and then you've lost all that charm also from your face so an easy way to save yourself from going through this trouble is to carry a little bit of food from home the pinnis and laddus and matris and shakarpadas and stuff so that that becomes one meal the second meal should be something which is easily available मूंगफली चना ये आप आराम से खा सकते हो that can be a mid meal you can आराम से buy fruits and local fruits are inexpensive तो fruit becomes a third meal और फिर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हम पीजी में हैं या हॉस्टल में हैं तो इट इज़ नॉट अ 5 स्टार खाना तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके जो भी उनका दाल चावल वगैरह है उसे खाना या इंडिया में ऐसी बहुत सारी चटनियाँ हैं जो आप खाली राइस पे डाल के खा सकते हो बहुत सारे अचार है जो आप रोटी के साथ खा सकते हो तो मेकिंग दोज काइंड ऑफ सेंसिबल कॉम्प्रोमाइजेस एंड वेन एवर पॉसिबल कुकिंग एटलीस्ट वन मील बाय योर सेल्फ आई थिंक इफ वी डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स then we can eat right without investing too much time. Having said that, we must not grudge the time that it takes to cook. Which is also why I was saying that if you're going to date, at least date a person who can cook because that's someone that you can keep at your own home, and then eat and stuff because otherwise it becomes very difficult. खाली जोमेटो और स्विगी का धंधा बढ़ेगा सो अब हमारी सेहत नहीं बढ़ेगी सेहत बढ़ने के लिए हर किसी को बेसिक काम आना ज़रूरी है मेरा हर डे चीट डे होता है ऐसे व्हाट इज अ चीट डे इज अ डे वेयर यू आर ईटिंग थिंग्स दैट यू लाइक आई ईट थिंग्स दैट आई लाइक every single day. I don't put myself last and say कि पहले सब लोग खा जाए और फिर उसके बाद मैं जो बचा कुचा होगा मैं खाऊंगी and all of that. Thankfully I don't come from that kind of a background. So for me to live like that becomes very easy. And yeah, because otherwise I've seen कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो खाने को एक टास्क बना देती है कि पूरे फैमिली को खिला दिया और फिर उसके बाद में किचन में ही खड़े रहकर फटाफट फटाफट कुछ भी खा लिया क्या खाया क्या नहीं खाया पता भी नहीं होता है तो खुद के लिए समय निकाल के आराम से बैठ के आप खाइए सो आई नेवर चीट आई थिंक माई चीटिंग विथ फूड विल बी if someone gives me something that I really don't like but I like that person so I'm saying this is amazing and I'm eating I think all of us have done that kind of cheating yeah. once in a while. That's good kind of cheating. Yes, that is. Yeah. See, first of all, I feel that, unfortunately, organic, inorganic and all of that, ये सब labels ही है और फिर so-called organic food सिर्फ अमीरों का ही हो जाता है. The main food that we have जहाँ पर आज भी इंडिया में dominantly farmers are small landholders so they are mostly using all of this gobar and all of that and growing food so we have a lot of access to naturally grown food so one of the things that we should do is not buy in malls and buy more in farms
we should also kind of, when we are going outside of the city, stop our cars by, there are a lot of these people who bring things on the cart and they sell them. We should be buying that kind of food. Chandigarh, I know, also has a culture of a farmers market. तो farmers market में भी आपको, है ना, तो बहुत बढ़िया बात है. Not everyone has this. So farmers market में आपको पता भी चलता है कि कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, और आपका relationship इतना strong हो जाता है that they also tell you कि आज ये मत लेके जाना. So I think that's a wonderful thing to have. So buy more from farmers market. And what else can you do? I think Chandigarh is a city with so many gardens and everyone has terraces. So growing a little bit of food yourself is also a good idea. इस मौसम में पालक, मेथी, चौली, या वो तो आराम से आप ग्रो कर सकते हो. You don't need too much. You need a very small patch or a very small pot. Planting trees of things like papaya or moringa, that is also something which is very easy. तो उनको ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं और आपको अच्छा खाना भी देते हैं. फूल भी आते हैं मोरिंगा के, अभी तो फूल भी आएंगे जनवरी फरवरी में, उसकी भी सब्ज़ी बनती है. सरसों का सीज़न है अभी, तो सरसों का साग भी आप घर पर मतलब वो ग्रो कर सकते हो. So there are many things I think that you can do for yourself. Sourcing isn't as difficult as it is made out to be. Until 30 years ago सब कुछ आराम से हम लोग सोर्स कर लेते थे, पर हम लोग क्लॉथ बैग से प्लास्टिक बैग पे आ गए एज अ डिफ़ॉल्ट, और हम लोग फार्म से मॉल पे आ गए हैं एज अ डिफ़ॉल्ट, और अभी पॉस्चरिंग के लिए हम लोग वापस क्लॉथ बैग पे चले गए हैं और फार्म पे चले गए हैं. तो एक टाइम ऐसा था कि हर कोई क्लॉथ बैग और फार्म पे था. अभी खाली सेल्फ अवेयर और अमीर लोग क्लॉथ बैग और फार्म्स में हैं. सो दैट हैज़ टू चेंज. वो डिफ़ॉल्ट वापस वही होना चाहिए, दैट न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी मील्स शुड बी फॉर एवरीवन. सी फाइनली सेहत जो है वो जब तक सबके लिए नहीं है, वो किसी के भी लिए नहीं है. सो इट हैज़ टू बी हेल्थ फॉर ऑल. सोशल मीडिया एक बीमारी है. वॉट इज़ माई एडवाइस? माई एडवाइस इज़, when it comes to medical advice, when it comes to nutrition advice, when it comes to travel advice, and when it comes to finance advice, don't be on social media. I mean, ये real life में आपको लेनी चाहिए. real life से आपको ये वाली advice लेनी ही नहीं चाहिए. social media इतना smart है that based on the number of selfies that you click and then delete, it starts pushing certain kinds of reels onto your feed. तो सोशल मीडिया बना ही इस चीज लिए है कि वो आपके इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्लॉइट करे और इवेंचुअली मोनेटाइज करें, एंड देन दे कीप यू हुक्ड ऑन टू दैट होल थिंग. सो सोशल मीडिया से ये सारी एडवाइस लेनी ही नहीं चाहिए. एंड आई नो दैट आई एम ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया. लॉट ऑफ पीपल नो मी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एंड मी सेइंग दिस साउंड्स वेरी रिच, बट आई वुड लाइक टू से दैट my advice has remained unchanged, whether it is social media or no social media. मैं last 20 years से same चीज़ ही बोल रही हूँ, because science जो है, it doesn't change. It only tells you things which have stood the test of time, which are reproducible and repeatable. And eating local, seasonal and traditional khana, promoting, preserving, protecting traditional diets, and taxing ultra food, like ultra processed foods, is really the only thing that we need to maintain for good health. So I think a good way to know if we are being influenced by social media when it comes to our decisions for food is to quickly check what is the screen time that you have on a week. And I feel that anyone with a weekly average of over 1.5 to 2 hours is going to be eternally confused about what to eat. अगर आप 5 घंटा 6 घंटा फ़ोन पे ही रहोगे तो then that becomes your primary thought. So आपका weekly average को आप 2 घंटे से नीचे रखिए, and then you will be fine. And what else would I like to say about social media advice? Yeah, that if you see it all the time on social media, it is 100% wrong for you. I think that's all that we have to know. कौन से टाइप के रील्स अगर आप देखेंगे, कौन से टाइप के रील्स वायरल भी होते हैं. पोहा इज़ बैड फॉर यू, रोटी इज़ बैड फॉर यू, मतलब जो आप सदियों से खाते आ रहे हो वो बैड फॉर यू अगर बोल दिया तो वही वाला रील वायरल होने का मैक्सिमम चांस होता है.
अगर आप ये कह दो कि इस सीज़न में मकई की रोटी सरसों का साग खाओ तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गो वायरल, you know, because that is well known. But if you put out a video saying why you shouldn't be eating makai ki roti sarson ka saag in winters, then it will go viral, you know. So that's how social media works. I think hum sab log we are smart enough to know that we are being played, and we should not follow social media advice at all. आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि 20 साल के बच्चे अपने 45-55 year old पेरेंट्स को बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, who in turn go and tell their 75 and 85-year-old पेरेंट्स कि उनको क्या खाना चाहिए. So we are like, okay, first at least we should question कि ये 20-year-old को ये एडवाइस आया कहाँ से, and if it has come from an influencer, then it's not worth following. बच्चों को भी बच्चा होने का मौका हमको देना चाहिए. We should allow them to be confused. We should allow them to be convinced with wrong ideas. But we should continue on the path of eating local, seasonal and traditional, ताकि जब हमारे बच्चे 20 से 25-28 के हो जाए, they will look at us and say, हाँ इसमें दम था, you know, she was eating right all throughout. I need to be like her and not like the, you know, any other social media influencer. First of all, I want to know that are you actually craving a samosa or a hot chocolate, or are you also thinking about someone with whom you can go out right now and have that samosa and hot chocolate? Because if it's like that, then 100%, you know, jump out of the window, get into your car and go have a romantic drive. Very few people can actually have that in real life. But if you really are waking up, not every single day, I mean, if you're really waking up not once in a while but every single day to the thought of a samosa and gulab jamun or pastry in the middle of the night, you need to ask yourself the tough question of what is it that I'm depriving myself of in my daily life. तो invariably जब हम 4 बजे अच्छा कोई होलसम खाना नहीं खाते हैं, जब हम डिनर 7:30-8 बजे से लेट करते हैं, तभी जाके हमको मिडनाइट cravings होती है. You know, when we don't put our mind to what we are eating, we never really assimilate all of the nutrients that we ought to assimilate from the food that we are eating. It is like listening without attention. If you listen with attention, then you actually get the point. And if you listen while, like, okay, you're talking and I'm on my phone or I'm thinking about something else, then I will never really get the whole point of what you tried to say. So being mindful about what we eat is important. While नाउ तो बीइंग माइंडफुल ईटिंग भी एक ट्रेंड हो गया है, एक हैशटैग हो गया है. लेकिन पहले जब आपको आपकी दादी नानी कहती थी कि यू नो सारे सेंसेस के साथ आप खाओ, so that is important and we should be ensuring that we are eating mindfully with all our senses, and phone and everything else should be switched off while we are eating. Phone का कोई जगह ही नहीं है. In fact, you know, because you asked about screens, I really feel that it is high time that we all have what I call as a screen zone in our homes. Okay? No, thank you. जैसे कि एयरपोर्ट्स पे रहता है स्मोकिंग जोन. यू नो, वी ऑल नो दैट इट इज़ एन एडिक्शन. तो जो एडिक्ट है उसके लिए एक जोन बनाया तो है, लेकिन इट इज़ इन अ, you know, it is in one corner, it is small, and then you have to stand and you have to do whatever it is that you're doing with many other people. So you don't have the time and the luxury कि आप बैठ के फूक रहे हो, वो है नहीं. तो now that we know that phone is also an addiction, in our homes we should make a screen zone कि जिसको भी घर पर स्क्रीन यूज़ करना है वो इसी जोन में जाएगा, खड़ा रहेगा और जो चेक करना है चेक करेगा. बैठने की यू नो कोई फैसिलिटी नहीं है. एंड देन यू कम आउट एंड देन यू इंटरेक्ट विद एवरीवन लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. अदरवाइज आजकल ये हो गया कि पहले ना लोग एक दूसरे के आंखों में देख के यू नो प्यार में पड़ते थे या जो भी है. Now it has become difficult because you only see people like this. So you see the top of their heads and there is nothing attractive on top of anyone's head. So yeah, only time tested traditional cooking increases nutrition value of food. Air frying, microwaving, all of these take away from the nutrition value.
And when it comes to the what we were discussing about this high consumption of ultra processed foods, I really think that it has to be one of the main reasons again is the fact that we still don't have gender neutral kitchens. And the next अभियान जैसा हमारे यहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आई थिंक एक लड़कों के लिए भी अभियान होना चाहिए. आई डोंट हैव अ वेरी गुड टैग लाइन, बट बेसिकली के लड़के पकाओ खाओ खिलाओ, यू नो. सो इफ वी हैव दैट, then I think we will have less access, or I mean not access, we will need processed food much lesser. And the other main thing that we really need here, other than personal interventions, are also policy interventions of taxing junk food, of ensuring that you cannot have ads for junk food, that they cannot be sold around schools and stuff. We do have some policies, but it's very hard for them to really get implemented. But I think we need junk food policies on a war footing, तभी जाके ये क्राइसिस थोड़ा सा डेंट होगा. अदरवाइज ये बढ़ते जाएगा. आई मीन जंक फूड कंपनीज आर हैविंग a ball in a country like ours because they're completely can sell and market unchecked. So that really needs to change. I think what all of us should be emulating from Kareena Kapoor is that she never says a single critical thing about herself. A lot of girls think that being very simple means that being critical about themselves. Because if you ever tell a girl you're looking very good, they will be like, nahi, it's the clothes, it's the angle, it is the light, and it is whatever. Kareena Kapoor, on the other hand, the minute she goes on to like a diet, within 3 days she will tell me, I'm killing it, huh? I'm so looking amazing. See my jawline, whoa, amazing. So I really think like all of us need to have that kind of confidence, that kind of self-belief. Now there is also a demand for millets. In fact, I think the problem now is that we are even making pastas and biscuits out of millets. That is, and pizzas out of millets. So I think that is a little problematic. And the so वो extreme भी नहीं जाना चाहिए. Millets का हमको भाकरी, लड्डू, you know, हलवाज यही सब करना चाहिए. So that's what we need to remember.